Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is the clearing corporations. So we'll see why news, what are these clearing counterparties or clearing corporations, which is the CCPs. Why has the ESMA, which is a European agency, it has de-recognized the Indian clearing corporations. What are the regulations on these in India? What is ESMA? What is EMIR? Then we'll be solving our prelims practice question, but will be based around this topic. Let's start why news. So European Security and Markets Authority, which is ESMA, the European Union's it is the European Union's financial markets regulator and also supervisor. It has de-recognized 6 Indian central counterparties from April 30, 2023. What are these parties? So these are Clearing Corporation of India, Indian Clearing Corporation Limited, NSE Clearing Limited, Multi Commodity Exchange Clearing, India International Clearing Corporation Limited, and National Stock Exchange IFSC Clearing Corporation Limited. So these are the 6 corporations which have been de-recognized. What are these clearing corporations? So these are a kind of financial institutions and they actually act as an intermediary between the buyer and a seller, and that is in various derivatives and equity markets. So these are such structures that will help to clear and settlement process in the financial market. It will help to facilitate it. So this is the primary function of them. इनका जो प्राइमरी गोल होता है वो एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का है. इनको आप बिचौलिए की तरह कंपनीज ले सकते हो जो एक बायर और सेलर के बीच में टर्म एंड कंडीशन काउंटर पार्टी की तरह वर्क करती हैं. सो ये रिस्क रिड्यूस करती हैं विच आर एसोसिएटेड विद बोथ द पार्टीज, ऑपरेशनल, सेटलमेंट, मार्केट, लीगल डिफॉल्ट इश्यूज, इन सबसे. देन these act as counterparty to both the buyers and the sellers in a trade. They collect money from each party involved and also they guarantee the terms of the trades to both of them. For example, you can consider this is a clearing corporation. So seller will transfer the securities to it, it will transfer the securities to the buyer, then buyer will pay funds to it and it will transfer the funds to the seller. बीच में कुछ इनका अपना बचता होगा. So what are the benefits? So they protect the trading firms against default from the buyers and sellers. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में जो टर्म एंड कंडीशंस हैं. इवन इफ अगर वन ऑफ द ट्रेडिंग पार्टी फेल कर जाती है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए, तो ये उसके लिए है. सीसीपीज के 2 मेन फंक्शन होते हैं इंटरमीडिएटरी एज अ परफॉर्म करने में, एक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड गारंटी द टर्म्स ऑफ ट्रेड. ये दोनों इसके फंक्शंस होते हैं. देन क्यों ESMA ने डिरिकॉग्नाइज किया इंडियन सीसीपीज को? सो इसने रिव्यू किया और इट हैज रिव्यूड एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑल द थर्ड कंट्री पार्ट सीसीपीज जितने भी इसमें हैं, एंड दे हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू September 21, 2020 एज पर द यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन विच इज EMIR regime. डिसीजन टू रिकॉग्नाइज दिस इंडियन सीसीपीज ये इसलिए आया था due to no cooperation arrangements between the ESMA and the Indian regulators. Indian regulators में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है. तो इनमें और ESMA में कोई कॉपरेशन अरेंजमेंट्स नहीं है, इसलिए इनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है. This regulator said that it will defer the application of the withdrawal decisions until April 30, 2023 to mitigate the adverse impact of the move on the European market participants. नाउ ये इन सीसीपीज को सुपरवाइज करना चाहता है, जबकि जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं आरबीआई, सेबी वगैरह, ये इस फेवर में नहीं है कि कोई भी एक फॉरेन एंटिटी इनको इंस्पेक्ट करे. नाउ व्हाट आर द रेगुलेशंस ऑफ दी सीसीपीज इन इंडिया? नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MCX क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. दीज आर क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टीज इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट ज्यूरिडिक्शन. It is authorized by the RBI. You have to remember this. इनको ऑथराइज आरबीआई करता है इंडिया में ऑपरेट करने में अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007. बट इनको जो रेगुलेट करने का काम है वो सेबी का है. ऑथराइज आरबीआई करेगा और इनको रेगुलेट सेबी करेगा अंडर द सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 which is SCRA, and rules and regulations made under it. And these are also subjected
on an ongoing basis to rules and regulations that are consistent with the principles of financial market infrastructure, which are issued by the Committee on Payment and Settlement Systems and also International Organization of Security Commissions. What is this ESMA? So ESMA is an independent European authority. इसका काम है एनहेंस करने का for the protection of investors and promote stable and orderly financial markets in that region, and it is the direct supervisor of specific financial entities such as credit rating agencies, securitization repositories and trade repositories, and it wants to regulate the CCP, so it cannot happen. This is the case. Now EMIR is an EU regulation adoption. It got adopted in August 2012. It aims to reduce systemic counterparty and operational risk in the OTC derivative markets. It sets higher prudential standards for the CCPs and also trade repositories. It enhances risk mitigation techniques for non-clear derivatives. It also establishes a framework for recognition and supervision of the third country CCPs. So this is the case. Now let's discuss our today's prelims practice question. What is the function of clearing counterparties? Recently seen in the news. It's an intermediary between buyers and sellers in various derivatives and equity market. It helps the start companies to grow faster. It works with the banks to reduce NPAs. None of the above. Second question, clearing counterparties are regulated by SEBI, World Bank, RBI or the National Stock Exchange. You can type the answer in the comment section. This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS.